हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इनफैक्ट आज मैं आपको एक मिनी क्रैश कोर्स देने वाला हूं इस वीडियो में। क्रैश कोर्स किस चीज़ का है? लिंक्डइन का। लिंक्डइन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आई बिलीव लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी प्रोफेशनल आउट देयर। किसी भी लेवल पे हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी कंपनी में हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, राइट, चाहे आप इंश्योरेंस प्रोसेसिंग में हो, चाहे आप सेल्स में हो, LinkedIn is the best ever network and I'll prove that to you today. Okay, let's jump into the video. अब LinkedIn है क्या और हम उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? LinkedIn एक नेटवर्क बनाया गया था टू कनेक्ट द प्रोफेशनल्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट ज्योग्राफीज, डिफरेंट ग्रुप्स। आपको पता है आज की डेट में LinkedIn में कितने यूजर्स? 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हर रोज LinkedIn पे आपस में कनेक्ट करते हैं। Imagine 1 billion LinkedIn users. So that's the family size of LinkedIn that's there, and you can leverage them. Imagine if you just know 1% or 0.0001% of this 1 billion users, right, and you can get benefit out of them. अगर आप सेल्स में हो, आपके पास क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। अगर आप सेल्स नहीं कर रहे, आपको जॉब चाहिए, आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, यू कैन फाइंड आउट द रेलेवेंट पीपल एंड रेलेवेंट स्किल्स देयर, राइट। आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आपको एम्प्लॉय चाहिए, आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी कंपनी हो। There are many ways you can connect. And in fact, you don't need anything. You simply want to connect over there. Join multiple groups on LinkedIn, right? And share what is there in your head. No one would stop you. You just need to follow one instruction. You just need to be responsible, ethical, practical, and share everything in an integrity format. You cannot write whatever you feel like there in LinkedIn. Because LinkedIn is very, very prompt in taking out people who are not, who are not behaving professionally. So let me put it that way. Okay, तो LinkedIn बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिटिव है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी लेवरेज दैट प्लेटफॉर्म फॉर आवर बेनिफिट। ओके, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि LinkedIn को हम यूज कैसे करते हैं। इनफैक्ट एज आई सेड एट द बिगिनिंग, इट्स अ मिनी क्रैश कोर्स ऑन LinkedIn. लेट्स जंप इनटू इट राइट नाउ। सो अभी LinkedIn पे लोग आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? Whether you want clients for your sales, for your product or services, whether you want to build professional relationship, or whether you want to get into a job. These are three major reasons people connect on LinkedIn. And people do not connect on LinkedIn just by their location. There are multiple continents. There are multiple. I know many people in my network who were selected for overseas opportunities through LinkedIn. A reason of that was because single focus. There's a single focus of LinkedIn. Build network. Build strong professional network. इस सब स्टार्ट कैसे होता है? I'll tell you. In fact, there are multiple ways you can connect on LinkedIn. आप multiple groups join कर सकते हो. Let's say if I want to know what is happening on the leadership area, or what is happening on the chat GPT area or AI area, I can just simply type that particular keyword that I'm thinking in my head to know more information, and I can find multiple groups. All that I need to see is which is the most engaged group, and I join that group and then start talking about it, start getting information about it. Right? By doing that, what will happen? People will respect me. People will know, yes, this guy is interested. LinkedIn knows, for that matter, that this guy is interested in this particular set of activities, this particular set of, what is it, industries. And that really helps. Okay. Similarly, you can follow companies. Let's say you are working in company X and you want to work in company Y. You are aspired to work in company Y. You can follow company Y, and as and when there is an opportunity, there is an opportunity which is posted on LinkedIn, because jobs are anyways posted on LinkedIn. You just simply need to grab that opportunity, type it, see who is the person who has posted that opportunity, ping that person, and get more insight about it. Right. Similarly, if you want to go, see, LinkedIn has multiple paid services these days as well. You can get, I'll tell you, one of the great things that I used once was Sales Navigator. It's an amazing piece, I'll tell you. Once you want to, build more leads, even if the person is not connected with you, you get their paid services, and that's happening. But free services are more than enough for any individual to grow their network and get the benefit, the right benefit. For employees, मैं कह रहा हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त जगह है, एक बार एक्सप्लोर करके देखिए. And it all starts with simply one thing: creating an account there, right? Having a profile there, having a solid profile. And that's what I want to talk to you about. Step by step, हम बात करेंगे. So in fact, I've made a list of all the things that are needed in order to make a compelling LinkedIn profile. Okay? तैयार है मेरे साथ? Let's see. I'll show you the step by step approach on how to create a LinkedIn profile. And then मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या वो सारी चीज़ें embed करी हैं, कुछ चीज़ें pending हैं, नहीं हैं. We'll see that as well. Alright? So these are the pointers that I've kept for you guys, that how can we
create a solid LinkedIn profile. Okay, so look at that, look at the pointers. It's 1 2, oh my god, 25. So 25 points हैं आज, मजा आ जाएगा आपको. It's actually a part of one of my foundational LinkedIn course. Okay, so let me share once. First, as I said, you have to create an account. If you do not have an account on LinkedIn, you're missing big time. Go grab, I'll share the link in the description box as well of the LinkedIn. Go, and it's not an affiliate link. You can go and create your profile. That is the first thing you got to do. And for that, you need to only have to have an email ID that's functioning. The second point here is use your CV. आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है. आपको सिंपल क्या करना है, गो एंड ग्रैब द सीवी. अब फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर लिखना है, जैसे भी आपने सीवी बनाया है, 1 पेजर वट एवर इट इज, यू गॉट टू क्रिएट दैट. पुट डाउन व्हाट हैव यू डन, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिखिए. I'll go into each and every pointer one by one. Okay, next here is headline. Now that's the differentiator. So let me quickly take you to my profile. अब आप ध्यान से देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट द हेडलाइन, राइट. हेडलाइन में देखो डिफरेंशिएटर क्या है. मेरी प्रोफाइल की हेडलाइन बहुत क्लियर है, बिकॉज आई एम रनिंग कपल ऑफ वेंचर्स, राइट, एंड आई हैव आल्सो रिटन अ बुक एंड ऑल, राइट. सो व्हाट आई डिड इज, इट्स अ वेरी सटीक, बहुत एकदम टू दी पॉइंट हेडलाइन है. एम्पावरिंग फ्यूचर लीडर्स विद फ्रेशर टू लीडर, दैट्स माय वेंचर. देन को फाउंडर एट एडुलाइट, दैट्स अनदर वेंचर दैट आई एम वर्किंग इन. EdTech innovator, because this is an EdTech company, and then author and mentor. So it's to the point, clear. Anyone who looks at my profile would know exactly what is the profile that I am leading to, who these guys are speaking with, right? So this is something which is very, very much needed. You got to be very, very clear in terms of what is that you want to give message to, right? It could be also, what do you want your future employer to know about? Okay, so anyone, see, the way you want to be perceived is your actually, सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है कि आपकी प्रोफाइल की हेडलाइन क्या है. जब किसी की प्रोफाइल चेक करते हो, आप लिंक्डइन में जाते हो, तो पहले प्रोफाइल में दिखता है रफली 70 कैरेक्टर्स. सो डू नॉट स्टिक योरसेल्फ टू 70 कैरेक्टर्स, राइट. पहला 70 कैरेक्टर्स दिखता है, आई नो दैट. ओके, सो 70 कैरेक्टर्स में आपको, you got to use more, but initial character you got to tell very clearly what exactly you're representing. Are you representing yourself in, let's say someone say I am an accounts payable specialist, someone would say I am a sales specialist. So write that sales specialist at the beginning so that that's visible to everyone in the world. Okay, now let's see what is the next pointer. Next pointer here is profile banner. So similar to headline, profile banner is very much needed, though I need to change my profile banner as well, but I'll show you what exactly is currently and what do we say when I say profile banner, उसका मतलब क्या होता है. Okay, अब देखिए ऑन द टॉप, ये इसको बोलते हैं प्रोफाइल का बैनर. ठीक है, बहुत लोगों का मैंने देखा है प्रोफाइल बैनर एकदम ब्लैंक होता है, देयर इज नथिंग आउट देयर. यू गॉट टू राइट व्हाट यू स्टैंड फॉर. एज आई सेड, ये बहुत क्रिएटिव बनाना चाहिए. आई नो ये पिक्चर इसको हाइड कर रही है, आई हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स, बट आई एम गिविंग यू अ पॉइंटर दैट दिस इज हाउ अ प्रोफाइल बैनर शुड लुक. राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंटर हियर. एंड द नेक्स्ट हियर इज द समरी. नाउ दिस पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समरी इज आपके पूरे प्रोफाइल का आप कहना क्या चाहते हो, बट इन डिटेल इट हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस, राइट. व्हेन यू आर टेलिंग पीपल व्हाट यू स्टैंड फॉर, यू गॉट टू टेल देम वेरी वेरी क्लियरली व्हाट यू स्टैंड फॉर. एंड हाउ वुड यू डू दैट? यू सिंपली गॉट टू गो टू दिस समरी टैब. लेट मी शो यू क्विकली. इसको बोलते हैं प्रोफाइल की समरी. सॉरी गाइज, इट इज अबाउट, दैट्स द समरी पीस, राइट. सो व्हाट यू डू, look at mine. I am just simply saying, first I am acknowledging people who are visiting my profile so that people feel warmed, and then I'm sharing what I've done, right. I am writing in the present tense very clearly what I've done so far. I'm also writing that. I'm also telling them what is my goal in life and all, and I'm also taking them, I have call to action as well. So in a way, you simply need to go and look at my profile, follow me, you will find out. In fact, this is a profile which is 99% correct profile which is needed to be. You guys can go and simply look at this profile and replicate that as well. That's a one-step short. I've given you a tip, right? Okay, so ये हो गया आपका समरी वाला एरिया. अब आते हैं वापस हम नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज वर्क एक्सपीरियंस. यू गॉट टू बी वेरी क्लियर इन शेयरिंग योर वर्क एक्सपीरियंस गाइस ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन में आप कुछ छुपाइए मत. डू नॉट हाइड थिंग्स. ठीक है, वट एवर इट इज, वट एवर वर्क यू हैव डन, right, which is relevant to your profile, which is relevant to your future self, which is relevant, which you have. It's simple. To put it simply, जो भी काम करा है उसको लिखिए, right, in a very professional manner, subtle way में लिखिए, pointers बना के लिखिए, right. On top, let's say I'm taking an example, another one, let's say a sales executive.
You should be very clear in saying what results you have achieved. ऊपर लिखिए सेल्स स्पेशलिस्ट कंपनी XYZ from and to if you've already worked on it, from and no to date because if you're working currently, and then you write down in pointers what all activity that you've done, what are the results you achieved. In fact, I would always say more than activities, write down the results those activities achieve. Numbers में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है. People would be connecting more. Okay, let's see what is the next point. Next है education. So write down the updated education, whatever higher education you have done. तो आपको अपना स्कूलिंग, अपना कॉलेज, अपना डिप्लोमा, अपना डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन द लिंक्डइन, दैट हैज़ अ रेलेवेंस अगेन, इवन इफ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल, आपने MBA कर रखा है, राइट, आप एंड देन यू सिंपली वांट्स टू डू अ कोर्स ऑन हाउ टू रन एन NGO and you did that, write it down. Maybe you can write it down in voluntary experience. That's what you wanted to do. But it's better to showcase that, right? People get some, so see, you get respect out of it, okay? People would know, yeah, this guy is not hiding anything. कुछ नहीं पता होता कल को कौन सी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए आपके. पॉइंट नंबर 8, कस्टमाइज प्रोफाइल URL गाइस. ये चीज़ ना मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट एक दो को छोड़ के, नो वन वाज अवेयर दैट वी कैन कस्टमाइज अ URL. आपने लिंक्डइन में कभी देखा है कि आपका जो प्रोफाइल है उसके एंड में www.linkedin.com के बाद स्लैश के बाद एक नंबर होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, या नंबर ही होता है कई बार. नो, दिस इज नॉट यू, बट लिंक्डइन विल गिव यू अ कोड, राइट? दैट इज, दे आर गिविंग यू अ प्रोफाइल कोड देयर. डू यू नो यू कैन एक्चुअली चेंज दैट? I'll tell you what I did. I have already changed it for myself and I can show that to you how you can do that as well. Look at that. My profile on the top, you can see it here as well. It's a linkedin.com/in this for India. That's default. And I put Vajinder -Kumar because there was someone else Vajinder Kumar already in there. And then profile URL is like this. So all that you need to do is go to your profile, view profile, and then click on this edit button. This is the pencil button that's there. I hope you are able to see my mouse which is moving. Click on here and update URL. Here it is. Okay, you can customize that. I can still go ahead and change it to something else, but I don't want to. You can use that. It's better that your profile link should sound like you. तो जो भी नाम आप वहाँ दिखाना चाहते हो अपने प्रोफाइल में, उसको अपडेट कर दीजिए जाके, आज ही अगर नहीं किया हुआ तो. ऑलराइट, लेट्स सी पॉइंट नंबर 9. आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है कोर्स में. Honors and awards. You mention the honors and awards if you had any. There is a section that as well under the what is it? Under the after the experience section, there is an honors and awards section. Mention any award that you have received. Let's say आप अपनी टीम में Star of the Week, Star of the Month, Star of the Year award receive किया आपने, या कोई भी या कोई भी ऐसा award receive किया which has relevance in your life or in your professional life. Mention it there, right? Point number 10. Weekly profile audit. Very nice point. We'll talk about it in detail in the end as well. So for now, I'm just saying weekly profile audit. What I want essentially is you should look at every point that I'm listing out here. You keep this out and take a screenshot at the end. सारे पॉइंट को हर हफ्ते 5 मिनट लगा के चेक करने का. That's it. Nothing else. इतना छोटा सा पॉइंट आपने हर रोज करना है. सॉरी, हर हफ्ते करना है. Start networking now. Most important point. LinkedIn में आ रहे हो तो क्या करने आ रहे हो? Find out the people. Let's say आप fresher हो, so I'm especially for freshers. वो कहते हैं हम network कैसे करें? We cannot go. So do not go and start asking people, give me job, give me job, give me job. No, don't do that. That's not the right approach to achieve and right approach to get onto a job on LinkedIn, or networking on LinkedIn. In fact, to me, networking is making lifetime, long-term relationship. And how would you do that? यार आपने कॉलेज में या आपने स्कूल में कुछ तो ऐसा डिफरेंट किया होगा. आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छे हो सकता है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, राइट? सो फ्रॉम दोज एंगल्स फाइंड आउट योर फ्यूचर गोल्स, ओके? और उस फ्यूचर गोल में आप लिंक्डइन में एक ऑप्शन है सर्च का, वहाँ डालिए, कीवर्ड डालिए, सर्च. लेट्स से यू वांट टू सर्च फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, पुट आर्ट एंड क्राफ्ट देयर ऑन द टॉप. यू विल फाइंड सर्टन ग्रुप्स, सर्टन पीपल हु आर commenting about that art and craft or sharing their skills or knowledges about that. Then slowly and gradually start commenting on their posts, and then once you do that regularly, then send them a friend request. That's where a fresher can do that. And for professionals, start with your home. What is your home? The company that you're working in. Find out the relevant people, find out each and every person, specifically HR,
एंड नेटवर्क विद द एचआर, बिकॉज एचआर के प्रोफाइल में आपको सभी मिल जाएंगे. दिस इज अ टिप. बॉस की प्रोफाइल से पहले एचआर की प्रोफाइल में जाए कनेक्ट कीजिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ द ग्रुप. लेट्स से इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, you don't know everyone, but you would be able to find out the relevant key people in the company through your HR profile, and then start sharing your friend request to them. They may accept, they may not accept. Don't feel bad about it. Some people do not check their LinkedIn regularly. I'm sure before this video you also weren't checking your LinkedIn. Okay, so let's go to the next point here. Start networking. Major benefit. Point number 12 क्या है? Seek recommendations and provide recommendations. Let's say अब आपको LinkedIn में बहुत दिन हो गए, आप LinkedIn में काम करना शुरू कर दिया और आप अपने कंपनी में, अपने प्रोफाइल में, अपने काम में भी सक्षम हो रहे हो, तो करना क्या है? Recommendations. Ask for recommendations. There is a section in LinkedIn which says recommendation at the bottom. Okay? आप वहाँ जाइए, अपने प्रोफाइल में जिसको आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रहा है, you can ask for recommendations. I guess I am right 100%. Yeah, I'm right. So you can only request recommendations from the people who are connected with you. Right? So make sure you are connected with the people you want to get recommendations from. Recommendation किस चीज़ की आती हैं? कि आपने काम कैसा करा, या आप कैसे कलीग हो, आपका बिहेवियरल रिकमेंडेशन भी आ सकती हैं, आपका फंक्शनल रिकमेंडेशंस भी आ सकती हैं. सो इट डिपेंड्स. सिमिलरली यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू शेयर रिकमेंडेशन. Okay, let's say someone worked for you. Let's say an IT guy helped you sort out your machine. Why don't you quickly find out that guy, connect with him, and give recommendation and say amazing work done. Appreciate publicly. Don't do the other way around. Do not negatively publicize anyone on LinkedIn. LinkedIn hates negative publicity, to be honest. Be as clear as open. Okay. अगला पॉइंट देखते हैं. पॉइंट नंबर 13, दैट इज एड इंटरेस्ट एरियाज. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. इंटरेस्ट एरिया क्या है? मतलब अब मैं अपनी बात करता हूँ. मेरा इंटरेस्ट लीडरशिप में है. लीडरशिप कोचिंग, ब्रांड बिल्डिंग, लिंक्डइन कोचिंग, बुक राइटिंग, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज. तो वो सारे मेरे क्या हो गए? वो मेरे कीवर्ड्स हो गए. सॉरी. So LinkedIn क्या करेगा? LinkedIn will ask me what are your interest areas. Not directly LinkedIn will come and ask me. I'll have to go into interest area and put down the keywords saying book writing or first time author or non-fiction books, or from that angle brand building or how to master LinkedIn, right? Or leadership. So there could be many words which are resonating with my personality, my profile. That would become my interest area. Based on that, LinkedIn will start showing the posts on my feed. तो उससे क्या होगा? I'll be happy बिकॉज मैं जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ मुझे सामने नजर आ रही है. मैं उस पर कमेंट करूंगा, लोगों से इंगेज करूंगा, कनेक्ट करूंगा, डिफरेंट पर्सपेक्ट्स लूंगा. इट विल एनहांस माई स्किल सेट. मेरी नॉलेज बढ़ेगी. ठीक है. सो दैट इज हाउ लिंक्डइन कैन बी यूज एज वेल. हाँ जी, नेक्स्ट देखो जी. पॉइंट नंबर 14 है फॉलो हैशटैग्स. आई थिंक वी कवर्ड और मोर और लेस इन द प्रीवियस पॉइंटर्स. फॉलो कंपनीज एंड ग्रुप्स. Pretty interesting. Now, I have also followed a few companies. You can follow the groups and the companies. We spoke in the introduction piece as well. How would you do that? Let's say, as I said, company X you are already working in, company Y, Z or ABC you want to, you are aspired to work for. Start following them. Start reading their news. That really helps you. That really helps you build your network. ठीक है. आपको अगर फ्यूचर कंपनी में जाना है एंड यू आर एस्पायरिंग टू गो देयर डाउन द लाइन 1 year 2 year 3 years, you would know what is happening in the company, what is happening in that particular group. ठीक है. That way your network will increase and your worth in the company's eyes will increase because you would know a lot of insights which they publicly shared, which generally people don't know. है ना. लोग अगर तक फॉलो नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा? कंपनी तो सारी सब अपनी व्हाट इज इट, दे आल्सो पब्लिश देयर फाइनेंशियल्स एज वेल. And if you're not aware of them and you want to join a CFO, how would you join the company as a CFO? If you are not learning about the company's financials from last 1, 2, 3, 10 years, you got to do that. Okay. अच्छा जी, देखते हैं what is the next point here. Point number 16, manage privacy. Now LinkedIn has an option. You can choose who can see your posts, right? Let's say if you want to hide, so that's a बड़े ध्यान से सुनना. Okay? आप एक एम्प्लॉई हो और आप अपने बॉसेस से छुपाना चाहते हो कि आप जॉब सर्च कर रहे हो. आप करते हैं, सब ने करा हुआ है, आपके बॉसेस ने भी करा हुआ है. यू हैव एन ऑप्शन टू चूज दैट पीपल विद योर कंपनी एज एन पीपल हैविंग योर कंपनी इन देयर प्रोफाइल वुड नॉट बी एबल टू सी योर सेल्फ सर्चिंग ए जॉब. ये ऑप्शन है. यू कैन गो एंड चूज दैट. सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज द प्राइवेसी. कि आपके फ्रेंड्स ही देख पाएँ, आपके फेसबुक में कोई भी देख पाए, या आप अकेले ही देख पाओ. सो देयर इज एन ऑप्शन सिमिलर लाइक फेसबुक. ओके.
So use it carefully. Point number 17 is follow influencers on, yeah, I'm sorry for a typo, and relevant influencers. So what I mean here is, let's say you're working in a particular industry. अगर मैं let me talk about social media. Gary Vaynerchuk, everyone knows in the social media area, Gary Vee is the, now don't want to say God, but he's one of the pioneers at the beginning. तो अगर आपने उसको फॉलो करना है, ठीक, अगर आपने सोशल मीडिया के बारे में एक्सपर्ट बनना है, तो फॉलो द बेस्ट, बिकॉज कनेक्टेड कनेक्शन का देयर इज अ लिमिट इन लिंक्डइन. यू कैनॉट हैव मोर देन some thousands, I think it's 20,000 or something connections in LinkedIn. Now maybe they've increased that limit recently as well. I don't recall it by my head as well. ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे आप? इतने बड़े सब्सक्राइबर, इतने बड़े जो अगर फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी बैठे हैं लिंक्डइन में, जिनके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, कनेक्शन सेपरेट, राइट, कनेक्शंस के ऊपर फॉलोअर्स होते हैं, राइट. तो पीपल एडमायर हिम, एडमायर पीपल लाइक हिम. करना क्या आपने? आप जाकर उनको फॉलो करो. यू फॉलो दी रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स इन योर इंडस्ट्री, in the interest area that you have that you want to go in your industry or your interest. Okay, that really help you out long term. Okay, point number 18 में क्या है देखते हैं जी. इसमें वॉलंटरी एक्सपीरियंस, ऐड वॉलंटरी एक्सपीरियंस. एज ए सेड, आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, या आपने लेट्स से यू इंटरेस्ट इन टेकिंग इंटरव्यूज, आप एक लेवल पे हो, राइट, उस लेवल पे आपको मज़ा आता है लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए. यू कैन मेंशन वेरी क्लियरली दैट आई एम ओपन टू टेक इंटरव्यूज ऑन संडेज to whatever company it is. This is not that this is not that, what is it, popular in India, but I'll tell you, in Western world, taking interview is one of the job. In fact, in India as well, I know 4 startups who are doing that as of now. They actually approach the, specifically in IT field, if I'm not wrong, yeah, if I'm not wrong, IT field में क्या करते हैं, they approach the relevant leaders and they ask them, they pay them for per interview. That's one of the example. I'm not saying start going to do that, but this is one of the example. How you can add voluntary experience. You say, I am open to take interviews on Saturdays and Sundays. What's wrong in it? If your company permits. Okay, point number 19 here is use featured option. Amazing option, guys. आपके LinkedIn में एक option होता है. Let me quickly share my profile. We open the public profile. I have to close. ये देखो आप. So there is an option called featured. I've added one only because this feature, I've had something else, I've deleted that and now I'm added here. So what you need to do is, whatever grand thing that you want to be known for, what are different things. So LinkedIn में जैसे option है, अब YouTube में, I want to have more followings on YouTube for that matter. So I said, okay, add a post as a newsletter, as an article, anything that is relevant for you to showcase your expertise to the rest of the world, which is over and above what you covered in the experience section. और अगर वो दोबारा रिपीट पे होता है तो डजेंट मैटर. लेट्स से आप एक की नोट स्पीकर बने किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में, लेट्स से यू आर अ टेडेक्स स्पीकर, गो एट देयर, हु इज स्टॉपिंग यू? ओके, लेट्स से यू बिकम व्हाट इज इट, हाँ, दैट you were guest of honor in some of the event, go at there. You got some certificates which you want to definitely add to the certification area, honors and certification rewards area, but you also want to showcase to people to know, let them know. You want to boost that self, right? You want to say, okay, भैया मैंने बहुत अच्छा काम करा है, देखो इसके बारे में. Go ahead here. So feature section is very very important, guys. Okay, do use it carefully. ठीक है, और इसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है. Okay, next point. Point number 20 is endorse others. It's more or less, जैसे यहाँ पे हमने बोला था, किधर गया, recommendations. Recommendation के साथ साथ में skills को endorse करने का option भी होता है LinkedIn में. You can endorse others as well. And of course, you will in turn get the endorsements. Truly engage, like, share, and comment. Very, very, very important. So let me share with you my engagement. Give me a second, guys. Okay, so let me quickly share the way I engage on LinkedIn. Can you see my screen now? Now this engagement really helps. Okay, so we were talking about point number 21. That's truly engage, like, share, and comment. इसमें मैं क्या बताने वाला था आपको? I want to share with you. How do I do that? So if I go down and look at the analytics, in fact, let me just see, look at the activity feed. And अभी post की बारे में बात करते हैं. 904 मेरी followers हैं as of now. And if I show you all the posts, look at the kind of engagement that I do. Okay, I have 6 hours ago, I've just commented on a post given by Ayushi.
Agarwal, she wrote something of that sort. I didn't simply say very good and this and that, but I shared my reflections on top of it. Similarly, if you go down further, this is the original post that I posted, right? ये मेरी अपनी post है. And then someone shared some job opportunities. I just shared it. I'm not simply saying CFBR. वो क्या होता है? Comment for better reach. CFBR, what is it? I know people like abbreviations, small abbreviations, but I'll tell you, LinkedIn like you to express more. Okay, LinkedIn is a different platform. Similarly, it was a birthday of a managing director Aditya Group. Look at that. And it didn't simply say happy birthday Roshni. I wrote down and reflected on the detailed post that this lady has shared already. So that's how. When you say truly engage, it simply means you got to be making sure कि आप दिल से ऐसे नहीं यार चैट जीपीटी में जाओ टाइप करके चिपका दो. Don't do that. That will not share your true reflection. Your true reflection will come out once you think from your head and write from your heart. तब आएगा मजा. LinkedIn as a platform is very intelligent. They understand everything. If you start using bots or something, they would not give you the reach that you're expecting. Okay? आगे देखते हैं. Now read posts and newsletters. I think more or less we covered it. We should go ahead and there's an option to read newsletters as well. वो भी LinkedIn में आता है. And then publish posts and be consistent. I'll touch base on this point. Give me one more second. Let's see what it is. Regular audits. So we had a weekly audit wala point. So weekly audit is my recommendation, but you can go and do monthly or quarterly audit as well. And update the experiences. आपका अगर एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, आप किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में या आपने कोई नया सर्टिफिकेशन हासिल किया है, उसको अपनी प्रोफाइल में अपडेट कीजिए. एंड मेक श्योर, दैट्स माई रिकमेंडेशन गाइज. अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन चॉइस. सम पीपल डू नॉट वांट टू शेयर व्हाट दे अचीव्ड. आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन अचीव करा है, मेक श्योर यू मेक इट पब्लिक. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? उसको अपडेट कीजिए और एक ऑप्शन आता है, क्लिक द रेडियो बटन एंड से पब्लिश टू पब्लिक, एज इन पब्लिक व्यू, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई डोंट रिमेंबर. ठीक है, तो पब्लिक देखेगी उसको. एंड दैट इज रियली गुड यार. शोकेस व्हाट यू डिड. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ठीक है. एंड द लास्ट हियर इज शेयर योर फीलिंग्स, लव, कूडोज एंड ऑनेस्ट ओपिनियन. We covered it, and I could not agree with this, and I could not agree more with this pointers. Share your feelings. I'm not saying simply comment डालते रहो टक टक करके. Don't do that. Truly engage and share your feelings, love, kudos, and honest opinions. If you have an honest opinion which is brutally not in line with the commenter, with the post author, no problem. Do that. LinkedIn will not say anything to you. So this is all. Okay, so we were supposed to talk on publish posts and be consistent. इसमें यार I'll give you my opinion. At the beginning, choose one day for LinkedIn. At the beginning, that's the bare minimum you can give to LinkedIn if you want to get back what you want to deserve from this platform. एक दिन 2 घंटे. अगर आप वीकेंड में सैटरडे लगाते हो 2 घंटे, ठीक है, या जो भी आपका वीकेंड है, अगर आपका रोटेशनल शिफ्ट है, आपका वीकेंड से ट्यूसडे पड़ता है, बुधवार को पड़ता है, किसी भी दिन पड़ता है, 2 घंटे डिसाइड कर लीजिए किसी भी टाइम पे, या 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को. सुबह 1 घंटा आपने लोगों के कमेंट्स पे पोस्ट करना है. शाम को आपने अपना एक पोस्ट डालना है और 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है. इफ़ यू डू दैट कंसिस्टेंटली फॉर 3 months टाइम, कितने हफ्ते हो गए? 12 वीक्स हो गए मोटा मोटा. तो 12 घंटे, 12 दिनों 24 घंटे आपने काम कर लिया. 24 घंटे में यू विल सी, मार्क माई वर्ड्स, योर फॉलोइंग विल डबल. नाउ आई एम नॉट जस्ट सेइंग, आई एम टॉकिंग दिस स्पेसिफिकली फॉर द स्टार्टर्स. अब किसी के ऑलरेडी 1 million सब्सक्राइबर हैं, दे एनीवेज नो व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ डू दे मैनेज दैट. दे वुड हैव देयर टीम टू मैनेज द शो. दैट्स द रिकमेंडेशन. एंड इफ यू कैन मैनेज, स्पेंड 30 minutes on LinkedIn every day, come what may. If you do that, you will see the benefit. I saw people getting clients from LinkedIn. I saw people getting calls without even them applying for jobs on LinkedIn. I know them personally. There are people in my community who got those benefits as well, and you can get them too. Okay, and let me know in the comment box if you want me to take a detailed session on LinkedIn, right? So I'll be taking a detailed session if you give me in the comment box that you need a LinkedIn mastery course from my side. Okay, and I can also help, my team can also help you build your profile better, to get more leads, to be visible on the LinkedIn platform. Okay, so your job is
इफ यू नीड माई हेल्प, योर जॉब इज टू पुट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. आपको अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पॉज कर करके देखिए. इस वीडियो के साथ साथ में मेरी प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हो. यू कैन सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट एज वेल. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड रिस्पॉन्ड टू यू एंड डीएम मी पर्सनली इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड टू बिल्ड योर ब्रांड, right? Overall, not just on LinkedIn, right? LinkedIn mastery is one piece of it, but brand building itself. So this is the second video of the brand building series. Remember, I told you the first video was how to write a book. Okay, that's also brand building. Now, second video is LinkedIn. I'll tell you what will be covering the next time. Watch this space for more. All right. Thank you very much. If you like my content, do like, share, and subscribe the channel. Thank you. Thank you so very much, friends. Bye for now.